당연히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 Estava a viver, caminhando na vida. So I wanted to study first thing in the morning to complete some topics beforehand because I'm going to be traveling for 1 or 2 days. Chorando por uma nova ferida. Mas como até que de um mato nasce uma flor. Sorry, I don't know any Earl. I'm right here! Well, okay, here's a weird thing. My mother was also 2 hours later. Hello guys, welcome back to my channel. Hi, I am Khushu Vyas, an MBBS intern. So you guys have already seen the thumbnail. I am traveling back home for only 24 hours, and by saying this I am literally freaking out, guys. Like, I don't know what is going to happen, and my mom is so angry at me. She knows that I can't pull this off, and I'm just going to be trying my best, to safely travel back home, and came back in about like 24 hours. So yeah guys, I just have taken a shower and right now it's like 1 a.m. and so the plan is my train is at 6:25 p.m. and I have like about 5 hours to go. I haven't packed yet. I haven't even decided my outfit for the event, and I'm so oh my god, like, I think my mom is right, guys. I don't know what is going to be happening. Take a deep breath. Right now I'm gonna be leaving for Zudio because I have no clothes to wear, like the typical girl shit, guys. I have no tops, I have no clothes, so I wanted to buy some tops basically, and I just hope कि वहाँ पे मिल जाए ढंग का कुछ. Zudio, I have to come back and pack my bags. That is most important thing. बहुत सारी चीज़ें pack कर. I haven't even decided my outfit yet for the main event. I am literally going, oh my god, what is good. Yeah guys, like there are gonna be a lot of breakdowns. Oh my god, yeah. So उसके बाद लंच टाइम तो निकल जाएगा. मेस में मुझे लगता नहीं है तब तक खाना बचेगा. आई थिंक I'm gonna be having my lunch out. ट्रेन के लिए भी मैं कुछ पैक करा लूँगी जाते टाइम. So yeah, that's the plan, guys. Hopefully it goes well. I hope you guys enjoy it. Let's go. A few moments later. So I reached on railway station on time and boarded my train successfully, and I was so relieved by this only. Like, I am a very silly girl, guys. I do find happiness in smallest things. So I boarded my train successfully, then we start moving. So hello guys. So I just realized कि मैंने ये नहीं बताया है कि why I'm traveling, back home for 24 hours only is because कि मेरी इंटर्नशिप चल रही है अभी and I don't have any casual leaves left. तो मैं बहुत मुश्किल से अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करके I
like manage करके I am going literally for 1 day के लिए घर, because so I have to attend a friend's wedding which is tomorrow, and like oh my god, like I am in a time crunch because मेरे को 4 के शाम तक घर होना है, and sorry, लाइक 4 की रात तक मुझे कैसे ना कैसे करके कॉलेज वापस जाना है, एंड लाइक इट इज लिटरली फकिंग लाइक 700 किलोmeters away from my home, and it is like I am pulling this for the very first time right now, like इतना टाइम क्रंच में मैं पहली बार ट्रेवल कर रही हूँ. सो अभी प्लान क्या है, आई एम गोइंग होम फ्रॉम वंदे, मैं झांसी से ले रही हूँ टुमारो, मुझे वापस दिल्ली ट्रैवल करना है घर से, बिकॉज माई फ्रिकिंग साड़ी जो मुझे पहननी है वो मेरे घर पे है. लाइक ओ माई गॉड, लाइक गर्ल बीइंग अ गर्ल, मेरे पे एक भी कपड़े नहीं है एज ऑलवेज. तो मैंने अपनी मम्मा से बोला था नई साड़ी ले. So I reached Delhi on time. My chacha came to pick me up from the station and he dropped me at my home. So after just 5 hours of sleep, I have to wake up because in 5 hours also I have to reach Delhi again for the event. So after coming back, I took a shower, had my beautiful lunch. My mom made this rajma chawal. I love rajma chawal, guys. Then I start getting ready क्योंकि मुझे निकलना था just half an hour में, and मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था घर से जाने का, बट गाइस यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. सो मैं फटाफट रेडी हुई, यू नो मॉम को हग किया, एंड देन लेफ्ट माई होम फॉर द इवेंट. आई रीच लीला ऑन टाइम, और हम बिल्कुल एकदम लंच टाइम पे पहुँचे थे वहाँ पे. सो आई मेट माई फ्रेंड्स, मीट दिस ब्यूटीफुल होस्ट गाइज जो आज का इवेंट होस्ट करी थी. उसके बाद यू नो सारे ही दोस्त आ गए थे वहाँ पे हमारे. वी हैड अ लिटिल गेट टुगेदर विद द फैमिली ऑल्सो. उसके बाद वी जस्ट यू नो वांटेड टू ईट एंड वी जस्ट ईट एंड गॉसिप. पूरा लंच टाइम हमने ये किया. देन वी ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर सम डांस परफॉर्मेंस दैट वी आर गोइंग टू डू देयर. Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando. And we had this beautiful welcome by the hotel staff, and we checked in our hotel rooms. Mas como até que de um mato nasce uma flor, muitas vezes é da dor que vem. So let me give you guys a hotel room tour. This is my first time giving a room tour, so bear with me guys. So this is the cupboard. उसमें सारी amenities थी. You know we had the I don't know press locker and all the other things जितनी भी रहती हैं यहाँ पे. देन उसके बाद हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था रूम. सो जस्ट यू नो तो ये था जहाँ पे हमने सारे बैग्स रख रखे थे. यहाँ पे कुछ स्लीपर्स रखी हुई थी, एंड यू नो लविंग द मैनेजमेंट जिन्होंने जितना भी अच्छे से अरेंज कर रखा था. देन देयर इज़ माई फ्रेंड, माई रूममेट तान्या, एंड आई एम सेइंग हाई टू हर. देन हैड दिस यू नो कोजी सा बाथरूम था, वाट टब था उसमें, एंड हैड दिस ब्यूटिफुल यू नो मिरर था. Was giving a full on cozy vibe with yellow lights के साथ, and I just fell in love with the bathroom, and like whole room बहुत अच्छा था वहाँ पे. This was the whole look of the room, and I was like literally I was in love with the room guys, like. And then we had this cupboard fridge था यहाँ पे, उसमें कुछ you know refreshments रखी हुई थी. Then I had this big window in my room. मुझे बहुत पसंद है कोई भी विंडो ऐसे ग्लास विंडोज़ हो बड़ी सी, क्योंकि मेरे हॉस्टल रूम में नहीं है, तो आई लिटरली मिस इट. और मैं जब भी कोई भी विंडोज़ देखती हूँ ना ऐसे मैं पागल हो जाती हूँ, लिटरली गो मैड. देन इवेंट से पहले, रात के मेन इवेंट से पहले वी हैड लाइक सम टाइम, सो वी रिलैक्स्ड अ बिट.
it. आई नो ये पूरा व्लॉग वॉइस ओवर होने वाला है बिकॉज मैंने सिर्फ लाइक बी रोल्स ही लिए हैं पूरे व्लॉग के लिए. सो या अभी हम होने जा रहे हैं तैयार एंड इट्स माई फ्रेंड्स. let's get ready now. Like I'm also like filming here, so let's get ready now. And like I literally couldn't record me getting ready, and we went to the wedding. And here's the beautiful bride and groom. So all the performances got over. Then we came back in restroom to refresh होने के लिए. So at about 12 event खत्म हुआ. We came back to this terrace. It was beautiful. The view was beautiful. योगी ने खराब करी है. तूने खराब करी है. एक तो इतनी जल्दी उठा दिया. तेरे को ना ऐसे ही डालूंगा. जल्दी क्यों उठाया? We are going for breakfast, guys. तो जैसे होता है most of the cases, we literally woke up late and we literally rushed to the breakfast क्योंकि timings over होने वाली थी. I literally don't know उस दिन I have what fetish about having a poha, and I was literally frantically searching for poha there. I don't know why, guys. अरे वो कोपर बोल रही थी थोड़ा बहुत एक्सटेंड करा देगी वो. मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें. पोहा किधर है? पोहा है क्या? So we came back in our room, after poolside थोड़ा chill करने के बाद, and I got ready and packed my bags again to check out from this hotel room. And I was literally like, oh my god, I don't want to leave this room, guys, ever. So yeah, guys, this is all happened. Then we booked our cabs to the railway station like Nizamuddin because I have my train back to Jhansi at about 2:40 p.m. Thank you for watching.